सोचता हूँ कि घर पे मतलब क्रिकेट थोड़ा बंद छोड़ ही दूँ और कमाऊँ घर के, क्योंकि मम्मी का टाइम मतलब उम्र ये हो गया है, चल नहीं पाती ठीक से। पापा ये पैसा कमा के घर को ये करूँ मॉम डैड को। लेकिन ये जो क्रिकेट है मतलब छोड़ने देता नहीं, और फिर मेरे को थोड़े दिन बाद फिर लगता है नहीं, नहीं, नहीं छोड़ना नहीं है। तो 1-2 दिन के लिए कर लूँगा, फिर बोलूँगा नहीं छोड़ना नहीं है। मतलब वो क्रिकेट छोड़ना होता ही नहीं मेरे से। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जभी तक मर नहीं जाता हूँ तभी तक भी मैं छोड़ूँगा नहीं है, मतलब चालू रहेगा, मतलब ऐसा पागलपन है इसका मुझे। In the labyrinthine slum known as Dharavi are 60,000 structures, many of them shanties, and as many as 1 million people living and working on a triangle of land, barely two-thirds the size of Central Park in Manhattan. Dharavi is ingrained in the Indian imagination, depicted in books or Hindi movies, as well as in the Oscar-winning hit Slumdog Millionaire. Dharavi has been examined in the Harvard Business School case study and discussed by urban planners from Europe to Japan. Yet, merely trying to define Dharavi is contested. Dharavi once was known for gangs and violence, but today Dharavi is about work. The police say the crime rate is actually quite low, even lower than in the wealthier, less densely populated areas of the city. Misery is everywhere, as in miserable conditions, as in hardship. But people here do not speak of being miserable. People speak about trying to get ahead. When I came into Dharavi, when I got to interact with all people here, you realize it's a vibrant society, it's a multicultural society, it is actually quite cosmopolitan in its belief. It's a hard-working community out here, works day in, day out in minimum of the facilities being provided. The level of energy, the drive in the youth of this area is very high. All it needs is a good platform so that they can reach higher levels of whatever they want to pursue. I've seen a lot of kids from the slums in Dharavi doing odd jobs and underprivileged to a limit where their daily needs are not met. Every kid has a right to a bright future in their life. So sports is a place where they learn discipline, they learn to lose and win at the same time. That's why we thought that Dharavi should be chosen, as there are maximum number of slums in Dharavi today. Despite their struggles and daily hardship, children of Dharavi keep pursuing their dreams and shaping their talent. When you go across Dharavi or when you cross those roads, you can see young boys always playing on the roads. It is very difficult to think that even Dharavi can have this kind of talent. These boys in Dharavi slums, they're living in most miserable conditions. You know, they are struggling. Their family is struggling. Anybody does anything to uplift their life, I think it's a great effort, great endeavor. I mean, the entire community will get motivated. As I was the DCP of this zone, I used to frequently visit Dharavi police station, and once I happened to visit this place, I was very surprised to see such a nice infrastructure in the middle of such an area. There I got to interact with Mr. Suraj Samad. We kind of sat down and we brainstormed over that how such a facility can be used for the local community as well, and it should not remain just limited to certain people who can pay for it and who have the means to enjoy these facilities.
We all were sitting together. It was Pranay Ashok sir's thought that we should do something related to sports. And I was like, cricket is something that puts people together. We should do a cricket talent hunt and get these guys to come and play for our state, our city, and get motivated to leave everything else and work towards goals in their life. We happened to discuss something to be done on Children's Day with the children of Dharavi. This initiative was born. The idea is the community will be motivated and everybody from Dharavi would want to look towards sports as a medium for the kids. Our aim is to deviate them from drugs, crime, or any other such unlawful activities, so that the overall atmosphere in Dharavi, the overall image of Dharavi is transformed in a positive way. The moment I heard about this initiative, it's actually very interesting and very thought-provoking. So this excited me, and then I thought that let us support this initiative. In last 2-3 decades, we are trying to bring more and more village people, rural people, people from very humble background into cricket. Well, I'm delighted to know that Mumbai Cricket Association, along with Rajiv Gandhi District Sports Council and Mumbai Police, they have launched a project to develop or identify the cricket skills of Dharavi boys. All kudos goes to Amol Kale, who is the president of Mumbai Cricket Association, and Suraj Samath, who are trying their level best to, hasten their talent, to bring them to a new era of Indian cricket. Because cricket in India is like a religion. Through this project, if the life of the slum boys can also be changed, I think it's a great achievement. The District Sports Club and the Mumbai Police arranged a cricket talent hunt camp to realize the dreams of such children from Dharavi. Their mission? To find a few talented players who will overcome all odds and play at the national level. I would urge people to support these kind of initiatives so that boys which have talent and which are in the Dharavi, just because they don't have access to the mainstream cricketing career, we should all support them and make them play one day, at least for Mumbai to begin, and one day for India. This will help them in their personal life as well as cricketing life to grow big. So when we got to know about this noble initiative, the first and foremost task for us was to make sure an awareness is created in the entire Dharavi area about these selection trials. Every kid who has ever played cricket or could play cricket, Mumbai Police ensured that they were there for the trials. They took part and their talent was showcased. The second task was now to make sure that we segregate these kids into different age groups. So we decided to have two age groups. One was under 16 and the other was above 16 age group. On the selection hunt day itself, close to 1,000 kids who registered themselves for the selection trials. It was good to see their passion, their energy and their enthusiasm on that day. Responsibility was also to identify the right coaching unit or the coaching staff to help us scout the right talent. We were very happy to have Jatin Paranska on board. He was involved along with other coaches who spent a lot of time identifying the right talent, gave them right wisdom as well and advice. Just बिंदास खेळा. जो तुमचा नॅचरल गेम आहे तोच खेळा. बॅटिंग करताना बॉलला बघा, बॉलिंग करताना पिचच्या स्पॉटला बघा आणि सिंपल ठेवा. ओके? ऑल द व्हेरी बेस्ट. What is probably the most important aspect of this entire exercise which DSC is conducting is the fact that these are children from Dharavi who don't have an interface with coaching, who don't have an interface with a good cricketing ground. They are getting this opportunity to be spotted and to be brought into the mainstream of Mumbai cricket. What the kids needed was actually to come in the mainframe and play with the club cricket guys so that they actually understand how cricket is played at the club level. There is so much raw talent out there which certainly can be worked upon given the right set of coaches, because I can see quite a few kids here who will go ahead and play a good level of cricket. And whatever help they need from me, I'm more than happy to do it, because I just feel that as an ex-cricketer, it's my duty to do so.
looking at children from Dharavi, you know that they are going to be coming from a lower strata of economic kind of piece. You have to make sure that the basics are in place. When they were lining up to go and bat in the nets, you had to make sure that they were wearing an abdomen guard, they had a helmet on. And I remember one child said that he wasn't wearing an abdomen guard because he was not wearing any underwear. He said he didn't have any underwear. To know that, these kids have nothing but their hunger and their talent to showcase. It was super, super touching. We were lucky to have really good talented kids come out of that selection trials. Out of 1,000, we had almost shortlisted 300. Out of 300, then we shortlisted 50. And out of those 50, over 4-5 days, we finally shortlisted around 22 cricketers, 11 in the under 16 age group and 11 in the above 16 age group. It is a great initiative. In future, it will give definitely a good result because they are professionally very strong without any facilities in their life. So once you give them a chance, when you give them facilities, they will perform very good in all aspects of life. प्राइमरी स्कूल में था तभी एक गेम चूज करने का था, मैंने हॉकी किया था, फिर 7th में क्रिकेट स्टार्ट किया। PhD इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ड्राइवर। तो उसने बोला भी था कि मेरे को क्रिकेट में ज्यादा करके इंटरेस्ट लगता है तो आई विल मूव ऑन टू क्रिकेट इटसेल्फ। मैं सुन के मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैं पहला क्रिकेट खेलता था, तो अभी लड़का खेल रहा है तो ठीक। मैं जब 7th में था ना तभी से मेरे को बहुत पसंद था क्रिकेट खेलने का। तो पापा को बोला तो फिर बोले कि अभी नहीं, पैसा नहीं है। पापा कारपेंटर है, मम्मी टेलर का काम करती है। 10 बजे जाती है, आती है 9 बजे तक। सुबह खाना मम्मी बनाती है, रात का हम लोग बनाते। मैं, मेरा भाई और छोटा वाला। अभी दाल चावल और भाजी बनाऊंगा, आलू का और फिर सोयाबीन। हैंड बनाते हैं, हाथ का भोजन सीखते। अच्छा चलता था, अभी लॉकडाउन लगा धंधा बंद हो गया। अभी कभी लेके मिलता है, कभी नहीं मिलता, ऐसा है। इसके पापा इसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं खुद नहीं बोल रही थी अपना नहीं है, लेकिन वो मुझे सीख लेगा तो सीख ले, जब उसकी इच्छा है तो कर ले दो उसको। पापा टेलर का काम करते हैं, कारखाना है, डिजाइन रहता है तो उधर डायमंड वो चिपकाते हैं। वो पहले कराटा से खेलना चालू किया, तो उसके बाद ब्लैक बेल्ट जब हो गया तभी बोला मैं अब क्रिकेट सीखूंगा। बड़ा हो के क्रिकेटर ही बनना है और कुछ सोचा नहीं। Prize distribution in the evening, when a lot of the senior officers from the Mumbai police came, some of the parents came, and you can just see the pride in the parents' eyes. And when we gave away the kits to everybody, I think that entire evening was magical. These youngsters have to change their mindset. They'll have to do away with that kind of complex that they are coming from that background. These people are Sachin Tendulkar, Virat Kohli, or for that matter, Mahendra Singh Dhoni in making. So they can become that big also. निकल के अंधेरे से सवेरे से मैं मेरे से रोज रोज करता है चैलेंज खुला के सारा मोहल्ला ये गली ये बस्ती देखेगा बनते हुए मेरे को हस्ती। टाइम पास छोड़ा यारों को टाला, फायर थी जितनी भी क्रिकेट में डाला। लड़के में दम बोले बिल्कुल गरम बोले, इसको दिया चांस तो सॉलिड ये तोड़ देगा, फोड़ देगा, ये मट्टा फोड़ देगा, मैं बोला ना फोड़ देगा, ये मट्टा फोड़ देगा। आई को बाबा को मुझ पे गौरव बोले, सचिन बनेगा तो कोई सौरभ बोले। मैं बोला मैं तो बस मैच बनेगा, खुद पे किया डाउट तो क्या ही करेगा। करके मैं डाउट को बॉल जैसा फेंका, हिम्मत के बल्ले पे ऐसा टिकाया कि बाउंड्री के पार जाते दुनिया ने देखा। धक्का लगाया तो किस्मत भी खसका धोया, ऐसा कि साला नहीं लॉन्ड्री के बस का। आई शपथ छोटे लिख के तू रख छोटे, छाप अपने धारावी का लॉन्च पे भी छोड़ देगा, छोड़ देगा, ये मट्टा फोड़ देगा, मैं बोला ना फोड़ देगा, ये मट्टा फोड़ देगा। This is just the start of their journey in cricket, and they will go places from here. But the progress which they are making and the coaches who are overseeing them, I think that is a very, very robust foundation which is being built for them. Something natural है तो ठीक है, वो चीज़ उसको करना है तो करने देते हैं। धीरे धीरे फिर जैसे टाइम जाता है उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि नो दिस वन नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। उनके वैसे ही जाके जस्ट मिंगल हिम। They feel like आज कुछ लर्न भी किया है, they enjoyed also. Training that concentrated individual players' strength and weakness were also conducted.
बेसिक एंगल, इट्स एंगल ऑफ द बैट। वो तो अपने होता ही है ना। Just by looking at their progress, I'm very sure that some of them will definitely reach the higher levels of this sport. Quality of selected players is always good. There is a lot of talent in these boys. What they need is actually right coaching, right diet, and right nutrition along with proper guidance. If they get that, we'll surely see good players coming out of them. The trainers devised exercises that develop the players' physical fitness, agility, strength, and stamina. Cricket being a team game, friendly practice matches were played to build a team spirit, coordination, and sportsmanship amongst the players. All the kids, they didn't want to go back home despite playing for hours and hours, despite training really hard. They just wanted to play, they just wanted to go that extra mile. When I saw them personally, there are many players with very high talent. Because these kids, they are really hardworking and dedicated और डरते नहीं किसी से। The players are good in their own way. Coming from the slums, they are born survivors. So I think that has just come forward in their game. 19 years old Rohan is a left-handed all-rounder. He is physically challenged since birth. His love for cricket began when he was just 7. 12 वर्ष 12 साल तू बैट्समैन का बॉलर है दोनों ऑलराउंडर हाँ मम्मी भाऊ अजय कौन बहन बड़ी बहन है उसको और छोटा भाई है और मम्मी पापा है वो 10वीं हो गया ना उसका तभी उसके टीचर बोले कि उसको क्रिकेट का बहुत शौक है उसमें डाल तो हम लोग बोले नहीं हम लोगों को तो इतना कैपेसिटी नहीं है बहुत खर्चा आता है अगले पर तो मैदान में रहता है खाने का उसको पढ़ाई भी करता है चलो मस्त झाले आता खूप प्रयत्न केला हॉस्पिटलला इकडे तिकडे नेलं त्याला पण काय फरक नाही पडला मशीन वगैरे आणलेली पण तो मशीनचा वापरच नाही लावतच ऐसे इंश्योरेंस से लोग भी बोलते हैं और हम लोग काम भी करते हैं बात हम लोग करते हो समझ ये पढ़ा वाला बोलता है आवडते तुला हार्दिक पांड्या वो क्या वो लड़के लोगों ने उसका नाम डाला था देखा जब वो लड़के लोगों ने हम लोग को बोला ना कि उसको किट मिलने वाला है ये सब तभी हम लोग मालूम आपको कैसा लगा I remember one left-arm fast bowler disadvantaged from a hearing and a speech perspective, and I was so impressed by him that I went back home and a friend of mine, Brijesh Solkar, looks after the Specially Abled Association of Cricket in India, and I remember calling him up and telling him that next time there are the trials for the Indian team, please let me know because I would like this boy to go and attend those trials. पहला सर बहुत बड़ा ग्राउंड था हमारे घर के सामने पूरा अभी घर बड़ा के पापा के उस टाइम जब छोटे थे तब खेलते थे अभी भी हमको प्रैक्टिस देते पापा मेरे भाई को और मेरे को मैंने यहाँ पे मोहल्ले में खेलना शुरू किया खेलते खेलते उसका ज्यादा इंटरेस्ट हो गया फिर अभी वो इंटरेस्ट है उसको बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में इंटरेस्ट 4th में आया था जब मैच देखता था इंडिया पाकिस्तान इंडिया का जब 9th and 10th स्टैंडर्ड में गया तो लिटिल एंजल स्कूल से DSO में नाम एनरोलमेंट करने लगे 5 बजे इधर से निकलता था स्कूल का कपड़ा वो सब बैग में रखे किड बैग अलग वो लेके चल के जाता था मैं माटूंगा जिम खाना उधर प्रैक्टिस रहता था प्रैक्टिस होने के बाद स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करके स्कूल में जाता था उधर से डायरेक्ट मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए डब्बा मेरे भाई के पास भेजती थी डब्बा भी नहीं मिल्क भी बेचती थी उसके साथ बॉटल में मेरा बेटा बचपन से ही बहुत एक्टिव है
इतना उसको संभालने के लिए बहुत परेशानी होती थी, एक जगह पे कभी रुका ही नहीं है वो। दरवाजे में फली लगाना पड़ता था, वो फली ऊपर करके वो नीचे से चला जाता था, इतना शरारती था। लेकिन बाद में जाके स्पोर्ट्स में उसका फोकस हमें दिखाई दिया। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अभी BSc IT डिग्री लिए, क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे को एक मैसेज आया कि DSC में एक सिलेक्शन है। तो मेरे पास तब जर्सी नहीं था, मेरा फ्रेंड ने मेरे को अरेंजमेंट कर दिए ऊपर का जर्सी, तो नीचे पैंट नहीं था मेरे लिए। तो मैंने अपना ये जीन्स पैंट के ऊपर मैंने अपना ट्रायल्स दिया था। सर ने मेरे को बोले थे कि क्या पार्टी में आया क्या? मैं बोला सर नहीं है मेरे पास, एक्चुअली 2 साल पहले खेला था, अभी आ रहा नहीं है, हाइट बढ़ गया इसके लिए। सर ने बोला ओके चलेगा करके डाल तू ट्रायल्स दे। तो ट्रायल्स देने के बाद फर्स्ट राउंड में पास आउट हुआ, तो सेकंड राउंड के लिए मेरे को बहुत मुश्किल हुआ। उसी दिन उसका एनडीए का एग्जाम था, तो मैं बोली तूने तो पढ़ाई नहीं किया, उसको मालूम है मम्मी का पहला पढ़ाई में ही है, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो मैं बोली तेरा उधर भी ध्यान नहीं लगेगा, तू एग्जाम बराबर नहीं दे पाएगा, तो एक काम कर तू इधर जा। तो उसको मालूम था इधर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे घर पे जाके बहुत डांट पड़ने वाली है, इसके लिए मुझे कुछ तो करना है। तो वो हो गया, उसके पास सिलेक्शन तो हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उधर नहीं गए तो इधर तो कुछ तो हो गया उसको। 300 बच्चे थे, उससे अपना लड़का सिलेक्ट होगा तो ज्यादा खुशी होती है ना। तो जब वो किट बैग लेके आया तो उसका पापा बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसपे क्रिश महावरकर लिखा था। बहुत बार उसको बोली कि तू पढ़ाई में ध्यान दे, इसमें कैसे हम लोग मिडिल क्लास के, उधर जाने तक इतना पैसा नहीं हमारे पास, फिर भी अभी उसका इसमें सिलेक्शन हो गया। तो बोला मम्मी मुझे करने का है, तो मैं बोली कर अभी थोड़ा सा। फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ कि उसके साथ साथ मैं हम्परिंग भी करता हूँ, जो बहुत ज़रूरत था मेरे लिए, क्यों मेरा खुद का मैं देख लूँ। जतिन परंजेश सर ने मेरे को शूज़ भी स्पॉन्सर किए थे ना, मेरे साइज़ के शूज़ भी नहीं मिलते, तो UK 13 साइज़ लगता है मेरे को। सर ने मेरा नाम पूछा, एज पूछा, शॉपकीपर का नंबर और एड्रेस भेजा, तो उधर जाके मैंने शूज़ ले लिया। सर मेरे लाइफ में एक बैकअप थी आजी, कुछ भी मेरे को कम गिर गया तो मेरी आजी थी। हाँ मेरा नाम बचपन से ये लोग को पाली मैं सब, मेरा क्या रिश्ता है। मेरी आजी अभी गुजर गई है, सो उसका ड्रीम है कि मैं बहुत आगे जाऊँ, तो उसका आशीर्वाद मेरे पीछे हमेशा रहेगा। तो मैंने सोच लिया अभी क्रिकेट में ही कुछ करने का आगे। These children come from very, very compromised backgrounds, where the father is probably, an alcoholic sometimes, and the mother is the main bread earner of the family. And I've seen so many of my friends who come from very disadvantaged backgrounds, seen their struggles, but I've seen the undeniable talent. So there's talent everywhere. सब 10th में क्रिकेट को वाहवाही करते कि स्टॉप करता हूँ अभी, फिर नेक्स्ट ईयर से चालू करता हूँ, लेकिन 10th में मेरे को ये लगा अच्छा खासा इंटरेस्ट आया। 10वीं में तो अभी उसको कैसा एग्जाम दी, इधर बैठता था, उधर से उधर जाता था। पेपर रहेगा ना तभी वो मैदान में बैट बॉल लेके जाता था। 10 बजे पेपर रहेगा ना तो 9 बजे से उधर से लेके आना पड़ता था, 7 बजे ही निकल जाता था बैट बॉल लेके। घर में रहेगा ना ये बॉल ऐसा खेल डाल के अभी उसको वही ना दे, टीवी में लगाए तो मैच ही लगाएगा, उसके मोबाइल में वही स्टेटस रहेगी, किधर भी उसको बहुत ही इंटरेस्ट है इसमें। एक साल ये किया मैंने, एक ITI कर रहा था, वो आधे में से ड्रॉप हो गया, तो उसके चक्कर में मैं जाता था ITI कॉलेज, और सर कॉलेज जाता ही नहीं था सर, ऐसे वो शीशे से बाहर निकला तो राइट में कॉलेज रहता था और सीधा आजाद मैदान, तो खाली जाके आजाद मैदान में घूमना, मैच देखना, प्रैक्टिस देखना, मतलब उधर ही बहुत टाइम निकल गया। जब भी से मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, मतलब देख के। हाँ पहले मैं कैटरेस का काम करता था, मतलब जो आइसक्रीम्स वगैरह ये सर्व करने का रहता है, MCA में शरद पवार क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पे उधर से मतलब ज़्यादा तो क्रिकेट में और इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ का ग्राउंड देख के प्लेयर को कैसा रिस्पेक्ट मिलता है, कैसा प्लेयर रहता है, तो और मोटिवेट हुआ मैं वहाँ से। बहुत सोचता था लू एडमिशन लूँ, वो होता नहीं था, मतलब उतना ये नहीं था घर का सपोर्ट, ये पैसा इतना फाइनेंशियल अच्छा नहीं हम सब पैसे का।
तो वो बोलता है मेरे को इधर डालो उधर डालो, पर इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि उसको कोचिंग करो ये करो। वो खुद काम बीम करके बाहर करता है वो खुद ही। मेरा हस्बैंड भी इतना नहीं मतलब कमाता नहीं, मैं हैंडीकैप है तो इतना काम मतलब मिलता नहीं, पर कैसा तो कम पगार में करना पड़ता है, जरूरत है करके। पहले से मम्मी मेरी काम करता है, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत किया मम्मी, मतलब हैंडीकैप रह के भी। तो फिर अभी मम्मी थोड़ा हाउस वाइफ ही है, छोटा मोटा काम जो होता है घर पे वो करती है। पापा का भी पैसा थोड़ा पार आता है जो घर पे मतलब मेरे पे खर्चा होता है, पापा करते जो भी खर्चा। मैं काम पहले से नहीं करता था, अभी चालू किया हूँ। पोर्टर का ऑर्डर हो गया, जोमेटो भी मारा हो बीच में। काम का पैसा ज्यादा नहीं होता है। एक तो ये अभी जो जूता यूज करता हूँ राजा भाई है जो वो दिए, और एक नॉर्मल शूज है मेरा दोस्त है वसीम नाम का, वो दिए। कुछ खरीदा नहीं मैं अभी तक। मम्मी पापा को कुछ ये ही नहीं है, मतलब इसका कुछ बारे में नॉलेज नहीं है कि इसमें कुछ है ऐसा वैसा। मैं भी उसको रोजी रोटी लगाना मांगता है। अभी इतने वो से अभी क्या बम्बई में मेरा ऐसा हाल हो गया था, लड़के का हाल हो गया तो क्या हो गया। मतलब कुछ दूसरा भी करना ही चाहिए, दो चाहिए लाइफ में, मतलब वो नहीं होगा तो ये उसको यही है अभी टारगेट, दूसरा कुछ नहीं है। इधर से मतलब कुछ ये करके निकलना बहुत मतलब ये बड़ी बात है सर। मैं किसी फीडबैक भी लेके जाऊंगा ना, अभी बहुत लोग रहते हैं जो बोलते हुए मतलब मम्मी हैंडीकैप है ऐसा वैसा, क्या देखना चाहिए सर, क्या कर रहा है इतना टाइम हो गया। मतलब मेरे साथ वाले तो सब कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं तो अभी मेरा ही देख रहा हूँ। मेरा क्रिकेट खेल रहा हूँ और जो कल कुछ पैसा काम से आ रहा है वो अपने में लगा रहा हूँ, घर का मतलब कुछ देख रहा नहीं। मतलब ऐसा भी एक मोमेंट आता है कि सोचता हूँ कि घर पे मतलब क्रिकेट छोड़ ही दूँ और कमाऊँ करके, क्योंकि मम्मी का टाइम मतलब उम्र ये हो गया है, चल नहीं पाती ठीक से। पापा ये पैसा कमा के घर को ये करूँ मॉम डैड को, लेकिन ये जो क्रिकेट है मतलब छोड़ने देता नहीं। और फिर मेरे को थोड़े दिन बाद फिर लगता नहीं छोड़ना नहीं है। फिर ये धारावी क्रिकेट टैलेंट हंट में उसमें सेलेक्ट हुआ मेरा MCA कार्ड बना। तब भी से मॉम इंटरेस्ट नहीं लग गई क्रिकेट में, बोली नहीं अभी तू कर रहा है तो ठीक है अभी कर, कुछ होना ही चाहिए। वो सेलेक्ट हो गए ना, बैग मिल गया उसमें नाम था, खुश हो गए। जैसा जिंदगी गया ना उसी दिन से वो दिन बहुत अच्छा लगा। तभी जो कुछ भी है क्रिकेट में करूंगा आगे, अच्छा लेवल खेलना है जहाँ से मतलब घर वाले को भी प्राउड फील दे और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और आगे बढ़ूं। ये इतना इनफ नहीं है मेरे लिए। How people still, despite all these challenges, still want to come forth and believing in themselves, believing in their talent. And I think that's the entire factor for all of us to be involved in this project. So this has been a really learning experience that talent comes from everywhere. I was seeing these kids, they did not have proper equipment, but they were well equipped in their sport. After those 2 months of rigorous practice, collectively all of us decided to give them an opportunity in the C division of Mumbai Cricket Association. The MCA as a parent body of Mumbai in cricketing, it can always support these kind of talent which is hidden. MCA can provide them coaches, MCA can always accommodate them in some kind of different teams which are under MCA. Our plan is to give them the all infrastructure in good condition. They can avail all these facilities of Mumbai Cricket Association. So we had a couple of players. One I remember very clearly was Krish, who is a pace bowler. So Krish, he played in C division for SPY, Shivaji Park Youngsters. There is Sarthak Mane, who also played for C division. He played for Pandurangwadi in Cosmos Shield. Then there were a couple of guys who also played in the knockout tournament. If you look at the strengths and weaknesses of the players, you know, the strength is obviously their inherent talent. I wouldn't say a weakness, but a development area is how they play in matches. You know, being in practice and being in a match situation are two different things. So now they're playing a lot of matches, and that's where you will see all the improvement coming in. Now they have started playing for clubs in Mumbai. Once they start doing well for clubs, selectors will notice them. And then the Mumbai Cricket Association talent ID system is very, very robust. They just need to continue on the journey which they have started working on.
The children were taken to the MCA felicitation ceremony to give them a glimpse of the respect and glory that lay ahead of them as The cricketers. Syed Mushtaq Ali T20 Trophy 2022-23 for the first time. Our president actually invited the kids to come and watch the match through a box in Wankhede for India Sri Lanka. And that was an amazing experience for the kids. I have seen the joy on the faces of these kids, like there was no better there. The match was over, the presentation ceremony was, certain children still didn't want to leave the stadium. And this really motivated them that they one day want to be on that pitch playing for the country or the city. When I look back at this initiative, it's not only one child who we feel that we've contributed to, but children who had come for those selection trials, they've all gone back motivated to play the game. It was highly motivating for the kids to meet dignitaries like Ravi Shastri. How are you? Yes, all good? Yes. Where are you from? Are, mera Nazdik. My father had a clinic there for 30 years. You know that? 31 years, doctor has. In spite of what you saw there, Dharavi and this slums, things of that sort. Healthiest babies came from there. Who's coming from the city? All Uski. Dharavi. As well as Shreya Shayyar. फोकस रहा आणि तुमचा कोच जो कोणी असेल त्याला रिस्पेक्ट द्यावी की पर्सिस्टंट म्हणजे कंटिन्यूस हार्ड वर्क करायला पाहिजे आणि होप की लवकरच इंडियासाठी Mr. Lad, who just won the Dronachari Award, and he was Mr. Rohit Sharma's coach. बेस्ट टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सर. लेकिन प्रैक्टिस में और पढ़ाई दोनों में खाली ध्यान देने का. मोबाइल से नंबर हो पहली बार. टैलेंट तुम्हारे पास ही रहता है, कोच कुछ नहीं करता है. कोच सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बट करना है आप लोगों को. ध्यान में रखो. This was all possible because of our President Mr. Amol Kale, Mr. Sanjay Nayak, our Vice President Ajankya Nayak, who's our Secretary, and Mr. Arman Malik, who's our Treasurer. These all people came together to ensure that these dignitaries met the kids and motivated them to do well in their future. This is a multifaceted program. It's also like a personality and an overall initiative which we are working on. We are looking to adopt the kids, sportingly adopt them, to ensure that these kids are nurtured further. In terms of the future, I would say we should not limit it just to Dharavi. We should expand it across the city. Well, not many boys out of those slum dwellers will be interested in other games also. If Mumbai Cricket Association is doing for cricket, then other sports bodies should also make an effort and try to identify talent amongst them for other sports also. I am seeing an unbelievable amount of talent in the 8, 9, 10-year-old girls. So I think there needs to be a separate initiative as part of this should be targeted towards girls as well. So we are organizing club level cricket matches, then T20 competitive tournaments for women. So we have been working hard on Mumbai women's cricket. All the tennis players in Mumbai, we will have some tournaments up there at the, different places, and we will pick the players from the tennis players to the leather ball level. Along with grooming them in cricket and other sports, you should also make arrangements for their education. If you provide them, then it will match and further up their career. And we expect to see more talent coming from Dharavi and doing this on a year-on-year basis. See, to prepare for future ahead in cricket, there is no shortcut. It has to be hard work. If they work hard, dedicatedly towards the game and do practice on a daily basis by following certain rules, it has to be a restricted life to become a good cricketer. So if they follow that, definitely they'll succeed in this. And I would moreover request the kids from the Dharavi to take more and more part in such kind of initiatives so that you never know, any one of them can always play for India one day. Every human being is equal, provided they get an opportunity. Access to opportunity is very important. And if somebody provides access to them, then they can be as good as people coming from higher background. And Amol and Suraj, they have set an example for other state associations. I would like to request all the state associations to identify such slums and try to bring the talent from there to uplift the poor and downtrodden people.
As the young and hungry from Dharavi rise up to take the stadium by storm, they do so with a passion and fire that burns bright within them. For they know that in chasing their dreams, they will discover their truest selves and unlock the limitless potential that lies within them. And with each step forward, they are blazing a trail towards greatness that will inspire not just their own generation, but countless others to come. For they understand that the power to transform lives and communities lies not just in achieving one's own goal, but in paving the way for others to follow.